why unfortunately I did not get selected in medical in SSB. After that I decided to join So merchant what navy. problem did you have? Sir, I have hand knee. What? Hand knee. There What is is no that? proper gap in between my hands. So can you show it to me? I'm just still confused. Yes, sir. Finally, tell me one thing. Why do you think that you are the right fit for merchant navy? Sir, Okay, Vikram, yes sir. how are you doing today? Sir, I am good. Are you comfortable? Yes sir. Okay, how can I know about Vikram? Sir, my name is Vikram Singh and I am currently 18 years old. I come from a lower middle class family and I come from Mehma village of Jhansi district of UP. Okay. And in my family there are 5 members including me, my parents and my 2 elder sisters. My father name is Mr. Sipcher and my mother name is Mrs. Keskali. Both are daily wage laborer. And sir, coming to my academics, sir, I have secured 90% marks in class 10th and 74% marks in class 12th. And sir, I have secured 81% PCM marks in class 12th. And sir, I have 84 in PCM. 81%. 81. Yes, And the aggregate is 74. Yes sir. Okay. And Continue. sir, I have completed my entire school to Hindi medium from UP board, but I stayed dedicated to learn in English and improve myself. Okay. And sir, as I wanted to join in armed forces since childhood, but so I gave entrance exam for NDA, but by unfortunately I did not get selected in medical in SSB. So after that I decided to join So merchant what navy. problem did you have? Sir, I have hand knee. What? Hand knee. There What is is no that? proper gap in between my hands. So getting selected in Indian Navy, there is a proper gap in your hand. So can you show it to me? I'm just still confused. Yes sir. Okay. Continue. So sir, after that I decided to join merchant navy. That's about it. Yes sir. You haven't talked about your hobbies and your strengths, your achievements. Sir, about them. my strengths are that I am a disciplined, hardworking person. As I had to do work in field since childhood with my parents and also as a laborer. So these things reflect that I am a hardworking person. And along with this, I also had to pay attention towards my studies. Although I have secured 81% PCM marks in 90% marks in class 10th. So these are the things made me hardworking and disciplined. These are the strengths, sir, which I have. So you said you also helped your father in farms, on the farms, you said? Yes, sir. Okay. So what all crops do you grow, and tell me about a Sir, particular crop. My father did not grow any crops because they gave it to lease to any other farmer. I did not get it. Explain it again. So my father did not grow any crop because my father is doing daily wage work, and Daily wage labor. Daily right? wage, Okay. and So do you own some land or not? own some land, but some little land, but he gave at So other people are rent. managing that Yes. land. Yes sir. How much is the extent of the land? Sir, 7 biga. 7 biga. Yes sir. Can you convert it into acres? Yes sir, there is 2 acres. 2 acres of land. So the entire land is fertile, or No sir, some of them? I think half of the part of my land is get to in the water due to rainy seasons. Okay. Okay. Why do you want to join merchant navy? Sir, since childhood I wanted to join armed forces, so I gave entrance exam for NDA and I also cleared NDA written exam, but I did not clear SSB because I have hand knee, so I did not get selected in medical exam. That is, you already mentioned all this. Yes sir, and my financial condition is not so good, so and my family always have to suffer much due to financial condition, and my father and mother both are daily wage worker, due to which and they are also getting old. What kind of work they do, like daily wage? So what exactly they do? So they as a laborer they make buildings and So they basically work as helpers. no, my father is as helpers with masons. Yes. Okay. And sir, I have also 2 elder sisters which are who are unmarried. So due to which What are they doing at the moment? they are studying.
They are studying. Okay. And so my father also have to paid to my sister's studies. So due to which there are so many responsibility on my father's shoulders, and I think he is 50 years old, so they are getting old. So it is my turn to take responsibility on my shoulders. So I want to be a financial stable in early age. So I want to support my family. So you completed your 12th grade in 2025, right? Yes, sir. Which means last year. Yes, sir. So why there is a gap of 1 year? Sir, when I passed 12th, during my class 12th, I did not know about the Merchant Navy. But after passing class 12th, one day my friend asked me to go Rameswaram, Tamil Nadu for visiting the Ramnath Swami, Padmanath Swami Mandir. Then I went with my friend to Rameswaram. Then I saw the ships in Indian Ocean. Then one thought came in my mind, then how to join ship. Then after coming back to my home, I searched on internet, on social media about this industry. Then I got to know about Merchant Navy. So there is a gap during this period due to my awareness, sir. So while on the ship, while you are working on the ship, who will take care of your parents? Sir, my elder sister is a very my elder sister is a mature and understand woman. I think when I will be on board ship, then my elder sister will take care of my parents. But she cannot be there forever, right? I mean, she for sure in the next, I don't know how many years, maybe 4, 5, 6 years, she is going to get married. Yes, sir. So after that, who will manage your parents? And by that time, your parents will also grow old, right? Yes, sir. So who will manage the things at home? Sir, my younger sister is also I have two elder sisters. But after getting married of my elder sister, I think she will take care of my parents. She is a very mature woman. How old is your younger sister? Sir, 24 years. Younger one? No, younger one 20 years. 20 years? Yes, sir. Okay. Finally, tell me one thing. Why do you think that you are the right fit for Merchant Navy? Sir, as I mentioned, sir, I come from a lower middle class family where I had to do work in the fields and also as a labor. And during my class 12th, when I was 14 years old, I started work as a labor with my parents, and after passing class 10th, I had to do work as a labor on the daily basis. So due to which I did not perform well in class 12th, as I secured 74% marks, which is less as compared to class 10th. So these are the things that reflect that I am a hardworking person, and also on the other hand, I maintained a balance between both study and my work. And although I have secured 81% fixing marks, so it reflects that I am a hardworking and disciplined person. So sir, I think you may consider me on the basis of these things. Okay. What is the integration of cos inverse x? Sir, minus 1 by root x square minus 1. Minus 1 upon? Minus 1 upon root x square minus 1. Integration of tan inverse x? 1 upon 1 plus x square. Okay. What's the formula for sine A plus sine B? Sir, the formula for sine A plus sine B is 2 sine A plus B by 2 into cos A minus B by 2. Say it again. 2 sine A plus B by 2 into cos A minus B by 2. Okay. What is the angle of depression, or angle of elevation rather? The angle between the two horizontal, the angle between two lines which are inclined at an angle. So the angle made between the horizontal line and the angle, the side of sight. Line of sight. Line of sight. Okay.
Okay, how will we find out the volume of this room? So as this room is the shape of cuboid, so the volume of cuboid is root LV plus BH plus HL. That's the volume of cuboid. Okay. No sir, volume of cuboid is L into V into H. Length multiply breadth into height. One last question before we move on to the other segment. If you take off the roof of this structure, if you remove the roof, what will be the total surface area of the remaining structure? So 2 bracket L square plus B square. 2 bracket? L square plus B square. Are you sure? Yes sir. Okay, so let us move on to the physics segment now. Okay, Vikram. Yes sir. Okay. Can you give me the definition of force? Yes sir. Force is a external effort in the form of push and pull, which tries to give motion in a body which at rest, and at a which tries to give rest in a body which is in motion. Okay. What is the difference between contact force and non-contact force? So the force between two bodies which are in contact is called contact force, and for example, the gravitational force is the non-contact force because there is no contact between two bodies. An example of contact force? Frictional force is the contact force. And any other? Sir, adhesive force. Adhesive Yes sir. is the contact force. Okay. Do you know force and thrust? What is the difference between them? Force and thrust. So force is an external effort which tries to force is an external effort in the form of push and pull, and thrust is the upward force which existed by a fluid on a solid. So this is an upward force. Yes sir. Okay. Can we say that all thrusters are the force Yes sir. and all force are thrust? Also can say that? No sir. Okay. Newton's second law of motion. So according to the Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force acting on a body. The mathematical representation is F is equal to ma. Okay. Can you give me the example? Yes, so for example, a empty cart is accelerate more than a full cart. Okay. What is the formula for force? F is equal to ma. Always F equal to ma. No sir, when the mass is constant. But if there is mass, there is no constant, Then sir, F is equal to V into dm by dt. V equal to? F is equal to V into dm by dt. Okay. Conservation of linear momentum. Sir, when the external force acting on a body is 0, then the linear momentum of a body remains constant. Okay. Can you find the recoil velocity of gun? Yes sir. The formula for recoil velocity of gun is equal to minus mass of bullet into velocity of bullet upon mass of gun. What is minus sign here? So the minus represent the opposite motion of the gun, which acts backward direction. For which? Which acts backward direction With respect to bullet. bullet. Okay. Newton's third law of motion. So according to the Newton's third law of motion, every reaction has an equal and opposite reaction. Every reaction has an equal. Every reaction has equal and opposite reaction. Okay. So action and reaction act between two different bodies or No. same bodies? Action and reaction acts between two different bodies, but simultaneously. There is no time between them. Yes sir. How does ship move? Sir, the ship moves as when the propeller of ship pushes the water in the backward direction, then the ship gets a upward force and a forward force, then
as the ship moves. So you mentioned that ship feel a forward force or forward thrust. Forward thrust, sir. So why you mention again and again force? Sorry, sir. Okay. Can you tell me composition of air? Composition of air. Sir, there are few gases are in the air, in which there are nitrogen, oxygen, argon, and carbon dioxide. The percentage of nitrogen is 71%, 71%. 78%, 78%. and oxygen is 21%, and argon is 0.18%, and carbon dioxide is 0.02%. 0.02 or 0.03? 0.02%. It's 0.3. Sir, actually 0.025%. Okay. So, do you know how dry ice formed? Dry ice. So the dry ice. How can prepare the dry ice? And what are the application of dry ice? Sorry, sir, I don't know about the dry ice. Don't know? No, sir. Okay. How can convert 0 degree Celsius into Fahrenheit? Just first of all, give me the relationship between Celsius and into Fahrenheit scale, and then finally tell me the 0 degree Sir, Celsius into Fahrenheit. The relation between Fahrenheit and degree Celsius scale is C by 5 is equal to F minus 32 by 9. F minus? 32 by 9. Okay. And the 0 degree Celsius just a minute. No. Okay. How can convert Celsius into Kelvin? So 32 Fahrenheit. 0 degree Celsius in 32 degree Fahrenheit. Celsius into Kelvin. How can convert? Sir, for converting Celsius into Kelvin, the relation between C by 5 is equal to K minus 273. Okay. Temperature is vector quantity or scalar quantity? So temperature is a scalar quantity. Okay. Latent heat? Explain latent heat. So the amount of heat required to raise the temperature of a liquid raise the temperature by 1 degree of a liquid is known as latent heat. So what about the specific heat capacity? So the latent heat is the amount of heat which is required to raise the temperature by 1 degree Celsius of liquid, 1 gram of liquid. Okay, Ohm's law. So according to the Ohm's law, the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided the temperature and physical condition remain constant. The mathematical representation is V equal to IR. What is R here? R is resistance. Suppose we increase the potential, we increase the voltage. Yes. Then resistance of conductor increase or decrease? No, sir. Resistance will remain same because Why? resistance will not depend voltage and current. So what are the factors which affect the resistance of conductor? Sir, temperature and length of the conductor and area of cross section of wire. Yeah, conductor. So if length increases, then resistance of conductor is? Resistance of conductor is increases. Or if temperature increases, then? Resistance of increases. Okay. Archimedes principle. Sir, according to the Archimedes principle, a body wholly or partially submerged in a fluid is buoyed up by a force that force is equal to the weight of the displaced fluid by the partial part of body. By the? Partial part of body. Okay, are you agree when a body immersed in a fluid, Yes, sir. it feels some amount of weight loose by the body? It Yes. experience? Yes. Are you agree? Yes, sir. So how can calculate that loss in weight? Sir, the formula for this is rho Vg. What is the formula of point force? The wind force, the formula for wind force rho Vg, sir. So both are same. Yes, sir. Because the change in weight of the body is equal to the wind force. Change in weight of the body? Equal to the wind force.
Okay, what is the difference between reflection of light and total internal reflection of light? What are the difference? So the when a light beam get incident on a smooth polished surface, then it gets bounced back. It is called reflection of light, and the reflection is the total and the phenomena of bending of light from a transparent interference into the same medium. When light goes from denser medium to rarer medium, and the angle of incident is greater than the critical angle. Okay, in which phenomena intensity of light changes? Reflection of light or TIR? Refraction, sir. Reflection or TIR? Out of these, in which intensity of light changes? Sir, total internal reflection. In total intensity of light changes. Yes, sir. Okay. What is Tropic of Capricorn? So when the sun rays directly overheaded on the Tropic of Capricorn, so the Tropic of Cancer. Cancer nahi Capricorn. So the Tropic of Capricorn is an imaginary line which it passes through 66.5 degrees south of equator. What word? 66.5 5 degree. Yes, sir. Okay, who was the first president of India? So Dr. Rajendra Prasad is the first president of India. And first prime minister? Sir, Pandit Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India. Who is the current president of India? Sir, Srimati Draupadi Murmu is a current president of India. Vice president? Sir, H.C. Hari Krishnan. C.V. Hari Krishnan. C.V. Hari Krishnan Sahid, sir. Sure. Yes, sir. Okay, capital of Germany. The capital of Germany, Berlin, sir. Okay, ruble is the currency of which country? Ruble? Yes. Sorry, sir, I don't know. And what's the currency of Russia? Okay, just tell me the country name which is west side of India and north east side of India. So the country which is situated in west side of India is Pakistan. Okay. And the country which is situated in east side of India. Northeast. Yes. Is China, sir. Any other country? Yes, sir. Nepal. Bhutan. Or capital of Canada? Ottawa, sir. Ottawa. Okay, last question from chemistry segment. Yes, sir. Okay, can you differentiate between entropy and enthalpy? So the total energy of a system is enthalpy, and the degree of randomness is called as entropy, and the highest entropy of purchase gas. Okay, what is the basic difference between acid and base? So the substance which gives H positive ion when dissolved in water is known as acids, and the substance which gives OH negative ion when dissolved in water is known as bases. Okay, carbon dioxide is acid nature or basic nature? So carbon dioxide, acidic nature or basic nature? bases. Basic nature. Okay, what is the composition of LPG? So the composition of LPG is propane and butane. And CNG? So CNG stands for compressed natural gas, and the composition of CNG is methane. What is the formula? CH4. Okay. So, Okay, we are done. okay, you are done. Okay. Thank you, sir. Okay, Vikram, so it's review time. Yes, sir. फीडबैक, जैसे कि तुम हिंदी मीडियम से हो, सो तुम्हारा फीडबैक जो है हम हिंदी में ही शेयर करेंगे. Yes, जो हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी. सो सबसे पहले तो देखो, पहले जनरल फीडबैक है. सिटिंग पोस्चर वगैरह मुझे ठीक लगा है. आई कांटेक्ट थोड़ा सा नॉन टेक्निकल सेगमेंट में जो जितने भी पैनलिस्ट होते हैं उनके साथ रखना है. Yes, थोड़ा थोड़ा उनके साथ भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि तुम मुझे स्टायर करे जा रहे हो. Yes, sir. ठीक है. टेक्निकल सेगमेंट में जो सवाल पूछ रहे होते हैं पैनलिस्ट, आप उनके साथ बनाओ आई कांटेक्ट. लेकिन नॉन टेक्निकल सेगमेंट में आप सब लोग, क्योंकि दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप थोड़ा थोड़ा Yes, sir. शेयर्ड होना चाहिए, मतलब Yes, sir. ठीक है, आई कांटेक्ट. दूसरा, वॉइस क्लैरिटी पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है. बेसिक रूल क्या है हमारा? ऊंचा बोलना है. पिच नीड्स टू बी Yes, sir. हाई.
ठीक है, स्पीक आउट लाउड, थोड़ा ऊंचा बोलना है, एंड यू हैव टू गो एट अ स्लोअर पेस, यानी रेट ऑफ स्पीच स्लो होना चाहिए और पिच हाई होनी चाहिए। तो तुम्हारा स्लो बोल रहे थे तुम, जो पिच थी स्लो लो पिच थी, और जो है तुम्हारा रेट ऑफ स्पीच भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ज़्यादा की साइड, मतलब ऑन द फास्टर साइड था, उसको कट डाउन करना है। एक बार में एक वर्ड खत्म करो फिर आगे बढ़ो। सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी टू सपोर्ट माई फैमिली एज माई पेरेंट्स आर डेली वेज लेबरर। अब डेली वेज लेबरर, तुम्हें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, तो इसको तुम्हें प्रॉपरली बोलना है, दे आर डेली वेज लेबरर, लेबर नहीं, ठीक है, लेबरर। ओके, इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कंटेंट पे आते हैं। हालांकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं उसमें, प्रोनाउंसिएशन भी है, तो उस पर नहीं जा रहा हूँ, उतना चल जाएगा। मेनली यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इंट्रोडक्शन में तुम्हें अपना जो सेलिंग पॉइंट था, एक तो एनडीए वाला तुमने बताया, ठीक है, दूसरा जो मेन था कि जो तुम्हारा हार्ड वर्क है और जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी शोकेस करना है उसमें। यस सर। ठीक है, जो तुमने पेरेंट्स को मदद करी है और साथ में तुमने टाइम मैनेज करके तुमने पढ़ाई भी अच्छे से करी है। यू ऑल्सो वर्क एज अ लेबरर, जैसे तुमने बताया कि तुमने लेबरर के तौर पे काम भी करा है, तो वही बताना है कि अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इट शोज़ योर रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग नेचर। यस सर। ठीक, तो ठीक था बाकी। और वाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी में, इतना ज़्यादा एलोंगेट नहीं करना है। जैसे कि तुमने एनडीए वाला एपिसोड मुझे पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि एनडीए में ऐसा ऐसा हुआ, मैं नहीं कर पाया, ठीक है। हालांकि वहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए, वो मुझे समझ नहीं आता है, वो मेडिकल वाला जो तुमने बताया, देखिए सर इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट ये है और मेरा इस तरीके से जो है वो। दूसरा जो है आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, सर एज आई मैंशन अपनी एनडीए वाली जर्नी कि मैं आई वांटेड टू जॉइन आर्म फोर्सेस, यस सर, ऐसे बोलना है। अब तुमने वो चीज़ ऊपर बोली, वापस से वही 2-3 लाइन ऐसा लगा कि रटी हुई है कि वापस से तुमने यहाँ पर भी बोल दिया वो, ठीक है। बस वॉइस क्लैरिटी पे हमें थोड़ा काम करना है और हमारा बाकी तो कंटेंट ठीक ठाक था। वाई शुड वी सेलेक्ट यू में, अगेन वी कैन स्टार्ट लाइक दिस, एज आई मेंशन सर आई हैव। अब तुमने वो वाली बात नहीं बताई थी ना इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ से रिलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो शिप पे जो है सर मेरी, जैसे मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स एज वेल, तो मैं शिप पे कोई भी काम करूँगा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी लगन के साथ काम करूँगा, जो कि मेरे नेचर में है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वैल्यू द मनी, पैसे को वैल्यू करता हूँ, तो मैं शिप ज्वाइन करना चाहता हूँ वहाँ पर टिके रहने के लिए, ना कि छोड़ने के लिए। यस सर। हालांकि वो मतलब अपना वो होता है कि मुझे यहाँ करना है, मतलब ठीक है, आई एम रेडी टू लर्न एंड ग्रो, आई एम रेडी टू फेस दो चैलेंजेस, ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग एज आई मैंशन अर्लियर, उस हिसाब से। सो फॉर दोज रीजन्स यू मे सेलेक्ट मी, ठीक है। ठीक है, आई थिंक वी आर डन। अब चलते हैं टेक्निकल सेगमेंट पे। विक्रम, एक तो जो प्रॉब्लम है, आपको जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो आप कुछ और आंसर देते हो, फिर आपको थोड़ी देर बाद आप मेन पॉइंट पे आते हो। ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई स्टेटमेंट बोला है तो उसको पहले आप अच्छे से सुने क्वेश्चन, फिर आंसर करें। ऐसा 2-3 क्वेश्चन में हुआ, पहले आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर आप बोले कि नहीं सर ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। पहली बात, अच्छी तरह सुनना है ऐसा पहले। दूसरा, जब मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे माना आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है, एक तो आपका रेट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है तुरंत। आप चाहते हो मैं इसको कब फिनिश करूँ, आपको जो आंसर आ रहा है उसको आप अच्छे से दो ना, पूरा अच्छे से, पूरा आराम से बोलो, उसको कंप्लीट करो अच्छे से। आप थोड़ा जल्दी में हो। कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताया आपने, जैसे CO2 का नेचर कैसा होता है। CO2 का नेचर एसिडिक होता है बेटे, स्लाइटली वो एसिडिक होता है, ठीक है। CO2 का नेचर कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। दूसरा, यहाँ पे जो कुछ GS के क्वेश्चन थे, जैसे रूबल इज़ द करेंसी ऑफ, ये रशिया की करेंसी है, ये रूबल। फिर एक सवाल और भी पूछा गया था कि रशिया की करेंसी, हाँ, तो उसका रिवर्स को तभी आपने आंसर नहीं किया। आपको इतना माइंडसेट तो समझना चाहिए कि रशिया ही वर्ड क्यों बोला सर ने तुरंत, इतना तो ध्यान में होना चाहिए कि सर ने रशिया बोला था। शायद पढ़ा नहीं होगा तो इस वजह से नहीं पढ़ा सर अभी। जब हमने डिफाइंड फोर्स की बात की, तो जब हमने पूछा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो फिर आप जैसे आपने कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सप्लेन किया, आप एग्जांपल दे रहे हो नॉन कॉन्टैक्ट, आपने एक्सप्लेन किया कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर आप बोल रहे हो द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर ग्रेविटेशन फोर्स। आप सीधे नॉन कॉन्टैक्ट से सीधे कॉन्टैक्ट से नॉन कॉन्टैक्ट में जंप करेंगे, मतलब पहले उसका तो एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जांपल देनी चाहिए था। Yes. यहाँ पे मिस्टेक है। और जब आपसे ये पूछा गया कि हाउ डज शिप मूव, तो आपने उसमें फोर्स नहीं लगती, थ्रस्ट ट्रांसफर होता है, थ्रस्ट वर्ड। अगर आप थ्रस्ट वर्ड नहीं बोलोगे तो आधा ही हो जाएगा कुछ, उसका आंसर इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। इसका मतलब आपको नहीं पता कंसेप्ट। प्रोपेलर वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसकी वजह से जनरेट होगा थ्रस्ट।
फोर्स तो किसी एक पॉइंट पे लगेगा ना, हाँ। उस पूरे पार्ट पे क्या लगेगा, थ्रस्ट लगेगा। Thrust। वो जो बॉटम पार्ट है, जो पूरा पार्टीशन, उसको क्या हल बोलते हैं। हल, तो yes। पूरे हल पे आपका थ्रस्ट ट्रांसफर होगा, तब जाके शिप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, केवल फोर्स लगने से मूव नहीं करेगा। यस सर। ठीक है। एंड जैसे हमने पूछा कंपोजिशन में भी आपने वो कंपोजिशन ठीक बताया। अब फिर से यहाँ पे आपने क्या बोला, पहले आपने बोला 71%, फिर जब मैंने यहाँ पे बोला मैंने कहा 71%, तब आप करें नहीं सर 78%। तो इसमें कन्फ्यूजन है आपको थोड़ा, या आप अच्छे से सुन नहीं रहे हो, धोखे से बोल या आप क्वेश्चन को अच्छे से सुन नहीं रहे हो। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से सुनना, तब आंसर करना। Yes। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था हाउ ड्राई आइस फॉर्म, कैसे बनती है ड्राई आइस। सर नहीं पता मेरे को। सॉलिड होते हैं ना, उसको जो लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हाईली प्रेशराइज फॉर्म में एक वेसल से पास कराया जाता है, जो कि काफ़ी वो रहता है, नैरो वेसल, जिसमें वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वो तुरंत किस में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस है वहाँ पे। कौन सी प्रोसेस है, सब्लिमेशन। जो आपकी जो गैसेस CO2 है उसको पास कराया जाता है, सब्लिमेशन। क्लियर है। अगेन यहाँ पे कैसे गलती कर सकते हो आप, लेटेंट हीट में बार बार आप कह रहे हो टेम्परेचर चेंज, जो कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। लेटेंट हीट में तो फेज चेंज होता है। हाँ, फेज चेंज। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हैं जो आप पता है, आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। ये है दिक्कत है, सुन नहीं रहा ध्यान से। फॉर्मल रहना कि हाँ जी सर, सॉरी सर, इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन का आराम, आप घबराओ मत, आप क्वेश्चन का आराम से सुनो फिर आंसर करो। यस। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, आप उसका ठीक उल्टा बोल लो कि सर इसमें इंटेंसिटी चेंज हो जाए। अगर इंटेंसिटी चेंज होती तो डायमंड इतना साइन करता क्या, आप खुद से सोचो। तो सर दोनों में चेंज नहीं होती, रिफ्लेक्शन में चेंज होती है इंटेंसिटी। देखो सन के लाइट पड़ रही है मून पे, मून का रिफ्लेक्शन हम तक आ रहा है, तो इंटेंसिटी कम हुई ना। हाँ। अगर इंटेंसिटी कम नहीं होती तो मून भी उतना ही चमकता हुआ नजर आता हमें। हाँ सर। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी बेटा, ठीक है। बाकी आपके पास बेसिक है नॉलेज, ऐसी बात नहीं, आप बेसिक नहीं, पर आपको ध्यान से सुनना है। जो 2-3 चीज़ें हैं, ये एक तो आपको सोच के आंसर करना है, ये नहीं कि पहले आप कुछ और आंसर करो फिर अपना आंसर चेंज करते रहो। Yes। और दूसरा क्वेश्चन आराम से सुनना। क्लियर है। अभी आपका जो ओवरऑल है दैट इज 67%, यानी कि आप येलो जोन में, अभी आप ग्रीन जोन में नहीं है। क्लियर है। दोनों में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में। थोड़ा वॉइस क्लैरिटी पे ध्यान दो, कंटेंट थोड़ा सा रीफ्रेजिंग कर लेंगे उसको, ठीक है, रिक्वायर्ड। ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।